Okay, guys, let's wait for another 2 3 minutes because the people who are coming for the offline class, just now I have opened the room, so let them come. By the time, if you have any doubts regarding the previous lectures, so you may proceed with your doubts. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Please type your name, enrollment number, and section in the chat box. So I hope by 3 o'clock everyone is free, right? Till 3 o'clock. All the sections, right? नहीं और बच्चे आ रहे हैं तुम्हें और एग्जाम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है ना? मालूम नहीं बेटा, नोटिस नहीं आई अभी। वही जाएंगे तब तक उससे पहले नहीं होंगे ना सर। कह तो रहा हूँ नोटिस नहीं आई है। बैकलॉग जल्दी शुरू हो रहा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सेकंड वीक से भी हो सकता है, थर्ड वीक से भी हो सकता है। जो नए एडमिटेड है उनका सिर्फ जनवरी में जाएगा, आप लोग का जल्दी होगा। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ आने तो वाले हैं यार, आज थोड़ा रूम खोलने में मुझे देर हो गई, बंद था ये भी रूम। हम्म, लगे मैंने ऊपर देखा था, फोर्थ फ्लोर पे।
Okay, guys. In the last class, we have seen two categories of exceptions. One was you call it compile time exception, and the other you call it runtime exception. Or in other words, the compile time exception is also called as checked exception, whereas runtime exception is also called as unchecked exception. Okay. Yesterday we have discussed this. We have seen the examples. We have seen that null pointer exception, string out of bound exceptions. These exceptions are of the type unchecked exceptions. Okay. Whereas in file not found exception or IU exceptions, these are of the type of checked exceptions. So we have seen that how we can figure it out is because if we write any code which may throw the exception, the first thing for a checked exception is that while writing the code, the compiler will force you to put that particular code in a try and catch block for checked exception. Okay? Please mute Sayyid Ishan, your mic. For unchecked exceptions, we have seen that if we do not care to put the try and catch block, the compiler will not complain. The code will compile, but when you execute the code, then only you will get the exception in case the exception condition is met. So that's how we will come to know whether the exception is checked or unchecked at the IDE or while compiling the code. But we can also know by other way is that we can check in the class hierarchy of the exception class. If there is runtime exception in between anywhere, we can just blindly say it's a unchecked exception. That's a runtime exception. If runtime exception is not there, rather just the exception class is there in the parent classes anywhere in the class hierarchy, then we know that it's a checked exception. So this was the difference that we have seen in the last class. Now we will move further to understand a little more nitty-gritties in the exception handling, and we have also seen the two keywords, the throw and the throws keywords, right? So in yesterday's example, I have shown you how to create a exception class also. So you can see this exception class extends from the exception class directly. Insufficient fund exception class extends from the exception class. That means insufficient fund exception is an exception, but insufficient fund exception is not a runtime exception. Okay? Because it does not extend from runtime exception. So that means insufficient fund exception is a checked exception. We need to put try and catch around the code, which may throw this exception. Okay? So we have seen that this insufficient fund exception has been used in the class saving bank account in the withdraw method, where the withdrawal amount was more than the current account balance. Then in that case, we use the throw keyword to actually throw this exception. ये क्लास में हूँ. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ हाँ कर लिया, बताइए. अच्छा ठीक है, तो आप मेरा कर लीजिए. ठीक है. So see, in this else condition is the condition where this situation is met, where the withdrawal amount is greater than the current account balance. So in that case, we use the throw keyword to actually throw the exception, and the exception will reach to the caller of the withdraw method. The part of the code which is actually being is calling this withdraw method of the saving bank account class on the reference variable of the object of the saving bank account class, that will actually get this exception. That particular line will be popped up with this exception. Okay? And the throws keyword, there's a difference between the throw and throws keyword. We have seen this also. So throws is a kind of declaration that a particular method may throw the exception. So this throws method is used in two places. One is where
in fact, not two places, but just one place, and that place is basically could be divided into two situations rather. So one situation is the particular class, the particular method where we are throwing the exception. So this method must also declare that this method may throw the exception in certain conditions, and the condition is the else condition here. Okay. The other thing is that the class which is actually the particular code which is actually calling this withdraw method, if we go to the call hierarchy as shown yesterday, so we can see that this is being called from this particular code, and it has been surrounded by try and catch block, because withdraw method is going to throw insufficient fund exception. That insufficient fund exception will pop up here, right? And the catch block for it is also available here. So whatever we want to do, we can do in this catch block. So we have seen that if we remove this try and catch block in the last class, then what has happened is we were getting a compilation error because insufficient fund exception, which is being popped up here, is a checked exception, right? So in this case, we had got two options. Two fixes were shown by the IDE as a help, and one was round with try catch as earlier, or I can add throws declaration. So the same throws keyword comes over here also on this method, which contains the particular code which invokes the withdraw method. See, now we don't have try catch, right? Okay. आज नहीं, सारे फ्री नहीं है, 3 बजे तक 2 सेक्शन की इसके बाद क्लास है, 3 बजे के बाद, तो 3 बजे तक ही दे पाऊंगा आज, तो इसी वजह से आज एक ही सेक्शन ले रहा हूँ, एक क्लास ले रहा हूँ. So withdraw method, you can see there is no try and catch block here, right? So why no try and catch block, even though withdraw method may throw the insufficient fund exception, which is a checked exception, is because we have shifted the responsibility to its immediate boss. That means this particular method which has got this code. So the throws shifts now here. Okay. So those situation, I have talked about the two situation. One was the actual withdraw method, which was throwing the exception, right? This withdraw method, which was actually throwing the exception, this also has to put a throws declaration with the throws keyword. Okay. And to throw, it use just throw. Okay, throw keyword. Whereas if I want to avoid this exception without putting a try and catch block in the part of the code which is calling this method, then I can add throws keyword in the method which contains that particular code, the caller code, which we call as the client code of the withdraw method. ठीक है, client code of the withdraw method. जो कोड इसको कॉल कर रहा है विड्रॉ मेथड को, उसको हम क्लाइंट कोड बोलते हैं इसका. ठीक है. तो ये सारी चीजें जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप सुनेंगे क्लाइंट कोड. तो क्लाइंट कोड का मतलब सिंपली ये है कि किसी फंक्शन के बारे में अगर क्लाइंट कोड कह रहे हैं या किसी क्लास के बारे में क्लाइंट कोड कह रहे हैं, तो जो भी कोड इसको कॉल कर रहा है वो उसका क्लाइंट कोड है. ठीक है. तो यहां तक क्लियर है गाइस? पीपल ऑनलाइन? Yes, sir. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके. Okay. Now let's move further. This was a quick revision. Now let's move further. So remember this example. This class exception example 3 contains the main method, and the main method contains two other methods, string traversal and array traversal, right? String traversal method, where is the string traversal method? This is the string traversal method, right? And this method basically has got a string, and we are trying to fetch a particular character at an index position 20. That means 21st character. Starting from 0,
It's 21st character, right? So this may throw the exception, right? Similarly, array traversal, here also the index position we are iterating throughout the array, or we are traversing the array which has got 1 2 3 4 as elements, integer elements, and we are trying to exceed the limit. So I is less than equal to 5, that means the iteration will go till 4, right? So 0 to 4, and that means 5 elements. But here we have got just 4 elements, so it will also throw an exception, right? But string traversal is going to throw a string out of bound exception, and array traversal is going to throw array index out of bound exception here. Okay, clear? Just for the revision purpose, this was the code that we had discussed in the previous classes. Now, because this code, both these exception, string out of bound exception, as well as array index out of bound exception, string index out of bound exception, or array index out of bound exception, both the exceptions which will be thrown by either string traversal or array traversal methods, they are checked or unchecked. Unchecked. I don't need to put a try and catch around them. Okay, they are unchecked, or runtime exception, what you call. Okay, they are unchecked exceptions. I have not put try and catch block, my code is compiling, right? That means they are unchecked exception, right? But still, if I want to put a try and catch block, I can handle both the exceptions differently. That means, say the first method, which is string traversal, if it doesn't throw the exception, if I put it here 5, say for example, so at 5 there is a space, right? 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 there is the I, right? So I will be printed, exception will not be thrown over here, right? So even though if I write string index out of bound exception as the first exception in the catch block, this catch block will not be entered in case of exception that is occurring from the array traversal method. Array traversal method is still going to throw the exception because, फिर से बोलूं, अच्छा हिंदी में बताता हूं एक बार. देखो, string traversal method जो था, यह जब 20 था तो ये क्या कर रहा था? I'm just repeating in Hindi, so people who do not know Hindi, just don't worry. इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग ट्रैवर्सल मेथड और अरे ट्रैवर्सल मेथड दोनों ही हमने देखा था कि सर्टेन कंडीशंस में, इनपुट कंडीशंस में वो एरर थ्रो कर सकते थे, है ना? जैसे यहाँ पे अगर 20 होता, अरे 20, तो ये 20 जो है कैरेक्टर इसके बियॉन्ड होता, जो स्ट्रिंग हमारे पास है, तो फिर स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो होता. ठीक है? अभी यहाँ पे अरे ट्रैवर्सल मेथड में क्या हो रहा है? 0 से लेकर के 4 तक लूप चल रहा है, यानी 5 टाइम चल रहा है, और हमारे पास जो एलिमेंट है वो 4 ही एलिमेंट है, यानी बियॉन्ड अरे की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे हम क्रॉस कर रहे हैं. तो यहाँ हमें कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. उधर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन था, इधर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगा. और दोनों आपके कैसे एक्सेप्शन है? अनचेक्ड एक्सेप्शन है. बिना ट्राई कैच ब्लॉक लगाए मैं काम चला सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगा रहा हूँ. ठीक है? और पहला हैंडलर जो दे रहा हूँ वो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा हूँ. ठीक है? और सिचुएशन जो बना रहा हूँ मैं, सिचुएशन ऐसी बना रहा हूँ कि स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए. इंडेक्स 5 में मुझे आई मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. तो ये कैरेट मेथड जो है, ये हमें कैरेट मेथड क्या करता है? ये थ्रो करता है. इसमें फर्दर मेथड्स कॉल हो रहे हैं. इनमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हो रहा है इफ लैटिन और करेक्ट यूटीएफ, कोई भी आप चाहिए, इसी में चाहिए, तो आप देखिए कि फिर फर्दर या कई सारे मेथड कॉल कर रहा है. एक्चुअली कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा किसी न किसी मेथड के अंदर से, जो नेस्टेड होते वापस आते आपके कोड तक पहुंचेगा. ठीक है? तो ये कैरेट जो मेथड है ये आपका स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है. सिग्नेचर में हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो सिग्नेचर में यहाँ थ्रोस डिक्लेयर नहीं है. अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए थ्रोस डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता है. ठीक है? क्योंकि उसको कैच करना जरूरी नहीं होता है.
ठीक है, ट्राई ब्लॉक उसके लिए जरूरी नहीं होता है, राइट। तो इसलिए सिग्नेचर में इसलिए नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोड में, नेस्टेड कोड में कहीं ना कहीं किसी कैरेट मेथड के अंदर दूसरे मेथड्स कॉल हो रहे हैं, उसके अंदर दूसरे मेथड्स कॉल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां उसको वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं मिल रहा होगा उस जगह से वो थ्रो कर रहा होगा। ठीक है, कोड में तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कभी फुर्सत होगी तो खोल के दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो नहीं आएगा, हमने यहाँ पे इसका हैंडलर डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई मैसेज प्रिंट कर दूं फ्रॉम कैच ब्लॉक ऑफ स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, ये अगर मैसेज प्रिंट कर दूं, ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा बहरहाल। क्यों क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और चूंकि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये कैश ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा फिर, अगला अगला मेथड जो है अरे ट्रैवर्सल अगली लाइन में एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, जब अगली लाइन को एक्सिक्यूट करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो अभी मैंने इसके लिए हैंडलर नहीं लगा रखा है, अरे ट्रैवर्सल के लिए अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का हैंडलर नहीं लगा। I have only used the I have only put the handler for the string index out of bound exception, and string index out of bound exception will not occur because character 5 is within the limit of the string length, right? So the control will successfully invoke this method string traversal, and this cache block will never be reached. So you will not see this message coming on the console, correct? But then when array traversal will be invoked, then in that condition, the control will come to array traversal, and when the control will reach to I is equal to 4, you will get the exception array index out of bound exception. But we have not put a cache block for that. So in that case what will happen? We have not put the handler, the control will go to the JVM because it's an unchecked exception, and the JVM will show the stack trace. JVM will show the stack trace, okay? For array index out of bound exception. ठीक, चला के एक बार देख लेते हैं। देखिए, कैरेक्टर आई उसने प्रिंट किया, देन 1 2 3 4 प्रिंट किया, देन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फॉर द लेंथ 4। ठीक है, इंडेक्स 4 के लिए, इंडेक्स 4 मतलब लेंथ 5 हो जा रहा है बेसिकली। सो ठीक है, नाउ what I can do is to handle that exception as well, I can put array index out of bound exception over here, so that if that problem occur, the control will of course not get into the first cache block, but it will get into the second cache block now. So let me say ex. Okay, here I will print cache block of array index out of bound exception. Okay, so you won't see this message, but you will see this message, right? Correct? Let me run it. Array index out of bound exception from the cache block of array index out of bound exception. Then the control will come after the try block, and rest of the code will execute. That means line number 22 will execute after the cache block. This also you are getting the output. ठीक है, या तो clear है? Okay. Now, so we have got two separate handlers to handle two separate situations, two different situations. We have not seen the stack trace over here. ठीक है, because we have handled it. Stack trace is showing stack trace is a bad thing. Showing exception is a bad thing to the user. ठीक है, we have not shown it. But suppose if you want to log it, we can always use this ex object, and we can use this to call print stack trace method to basically print the stack trace also. अब क्या होगा, ये मैसेज भी आएगा साथ में प्रिंट भी होगा। ठीक है, stack trace भी प्रिंट होगा। ठीक है, अब देख लो, अब देखो, अब stack trace भी प्रिंट हो रहा है ना। तो stack trace प्रिंट करने के बाद then it will go to the line number 23 and it will print after cache block. Correct? ठीक है ना? Now, normally this is not printed on the console,
normally what is done is this is basically sent to the log file. That means you use some of the logging libraries which are connected to either databases or some file system, particular files, and then you send you put this function call within the function call of that logging library that will send directly to the file system. So this stack trace will not be printed on the console. This will go to the file or the database, whatever you prefer. ठीक है, एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है. ठीक है, यूजर को नहीं दिखाते हैं लेकिन उसका कहीं ना कहीं लॉग मेंटेन कर लेते हैं. ठीक है, ताकि जब एडमिनिस्ट्रेटर उसको देखे तो उसको पता चल जाए, अच्छा आज जब के दिन में इतने टाइम के बीच ये प्रॉब्लम आई थी, तो वो रीजन सर्च कर सके कि प्रॉब्लम क्या थी इसके बिहाइंड. ठीक है, बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, इनपुट की प्रॉब्लम हो या कोई और कोड की प्रॉब्लम हो या कोई बिजनेस लॉजिक की प्रॉब्लम हो, बट दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर. Now, so we have put, although both these methods in the separate in the same try block, but we have put their separate, cache blocks to handle them separately. Okay. What would have happened if a string out of bound exception would have occurred and array index out of bound exception will not occur? In that case, what will happen? First, you will get the string traversal method throw an exception, string index out of bound exception. The control will come to the cache block. From cache block of string index out of bound exception will be printed. The control will not come back to the try block and will not invoke array traversal. Control will not come to the next cache block because the first cache block has caught the problem. It will come after the cache block and it will execute after cache block. यही होगा. चला के देखने एक बार. करेक्ट है, as expected. ठीक है. Now, if we wanted that after string traversal method has thrown the exception, array traversal method, it should be handled in the cache block of string index out of bound exception, and array traversal method should also be called. Then we will have to put the string traversal method in the separate try block and the array traversal method in the separate try block with their individual specific cache blocks. Okay, so this is how we decide that whether we should put multiple code statements or number of lines of code into one try block or different try blocks. ठीक है, अगर हम इसी को ऐसे कर लेते कंट्रोल C, instead of doing this we would put this. Then we do not need to separate code blocks. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि here we are getting the exception. The control is jumping to this cache block, leaving array traversal. ठीक है, it will be handled over here. This message will be printed, right? And once this handler runs, right, then in that case, array traversal will still be invoked. So left of code we have put here, so that the routine completes. This is how we can do. Clear हो गई बात? Okay. Now, so we know why we should separate out the code into separate try blocks, right? This is one situation, and why we should put multiple cache blocks to handle different situations, because their resolutions may be different. ठीक है, क्लियर? इस कैश ब्लॉक में हम कुछ और कर रहे हैं, इस कैश ब्लॉक में हम कुछ और कर सकते हैं. ठीक है, maybe these methods, string traversal and array traversal, are getting the variables which may be actually used to print the character at character number 25 instead of 25. Some x variable may be passed over here, and x would have been used here, or x would have been passed and that would have been used here for I less than x. So if that would have been situation, so in that case, what we can do in the handler, we can change the value of x to fit inside the bound. ये भी कर सकते हैं. This is another way to handle. आ रही बात समझ में? दोबारा से रिपीट करो हिंदी में. देखो, अभी तो हमारा क्या हो रहा है कि जो 25 हमने लिखा है और ये जो
i is greater than 4 जितनी बार लूप चलेगा, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। ये हार्ड कोड कर रखा है ना, हार्ड कोड मतलब वैल्यू दे रखी है उनकी, ठीक। अगर हार्ड कोड ना कर रखा होता, हमने ऐसे कर रखा होता कि इंट x, ठीक है, और यहाँ पे x से रिप्लेस हो रहा होता वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पास कर रहा होता, चाहे मैं 5 पास करूं या 25 पास करूं। अगर 5 पास करने से एरर आ रहा है, 25 पास करने से एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, इसको करेक्ट करने का एक तरीका ये हो सकता था कि मैं यहाँ पे इसकी जगह अब की बार 5 पास कर दूं, ठीक है, या उसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करके लेंथ -1 सेट कर दूं, है ना। ऐसा कुछ कर सकता था हैंडलर में। तो दिस इज अनदर वे टू हैंडल इट। सिमिलरली वी कुड हैव यूज्ड x हियर आल्सो, ठीक है। अगर यहाँ पे x मैं यूज करता तो क्या होता, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे मैं कहता भाई i इज लेस देन x, इतना ही बार लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता कि 4 बार चलाना है कि 5 बार चलाना है, होता ना। तो ये मैं कंट्रोल अब स्टैटिकली नहीं कर रहा हूं, अब मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूं, ये मैं वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूं, करेक्ट। तो ये भी एक हैंडल करने का तरीका हो सकता है। चाहे मैं अरे की लेंथ यूज करके फाइंड आउट करूं मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, उससे एक कम वैल्यू को देख लूं, या मैक्सिमम उस लेंथ तक ट्रैवर्स कर लूं, ठीक है। तो दीज आर द वेज टू रिजॉल्व, ठीक है। आई जस्ट रिपीटेड इन दी व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो I'm saying this again just because those who are not those who do not know the Hindi language, they should not be worried, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ना। एक सिचुएशन और बन सकती थी, और वो सिचुएशन ये हो सकती थी कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 सेपरेट कैच ब्लॉक्स फॉर 2 सेपरेट प्रॉब्लम्स, that is string out of bound exception and array index out of bound exception, we could have replaced both the cache blocks with a single cache block, and we have discussed this in the past class, and that was index out of bound exception। याद आ रहा है? Now index out of bound exception जो है, this is the parent class of string index out of bound exception as well as array index out of bound exception, ठीक है। ये देखिए, the child of object is throwable, the child of throwable is exception, the child of exception is runtime exception. That means everything what is going to come after that is a unchecked exception, ठीक है। The child of runtime exception is index out of bound exception, which is a common exception for both the cases, and the child of index out of bound exception is array index out of bound exception as well as string index out of bound exception. Clear? So just like animal A is equal to new dog, animal A is equal to new cat, where A is the super type of dog and cat. Similarly, index out of bound exception is the parent class of string index out of bound exception as well as array index out of bound exception. So we can say dog is an animal, cat is an animal. So string index out of bound exception is also an index out of bound exception. ठीक है? Array index out of bound exception is also a index out of bound exception. Now we can catch either of the two exception that may occur in any of the methods depending upon what value we are passing, ठीक है। And we can say system dot out dot error indexing problem, a general message indexing problem, yeah, we are not giving a clue whether it's a about string traversal or it's about array traversal, ठीक है। It's about index, the index is getting out of the bound, something is happening with the index, that index value is wrong, ठीक है। Now in this case what will happen, array traversal has got 4 which will be replaced by x, so the code will run 0 to 4, ठीक है, less than 0 to less than 4, that is 3, right? So this method is not going to throw the exception, but string index out of bound exception is going to throw the exception. If we run it, we get a general message indexing problem, then after the catch block array traversal will not be executed at all in this case, ठीक है, correct है।
Instead, if the problem is reversed, 5, it will be in the bond. Let me say 5 again. So that will be go beyond the bound of array. Okay. And if we run this code, then again we will see the same output indexing problem from the cache block. Rest of the output are different because that will do whatever the code wants to do till that point, the exception reached. ठीक है? Clear है? कंसोल एक बार जल्दी से बंद हो गया तो दिखा देता हूँ फिर से आपको. आई प्रिंट हुआ था, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद बाउंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद लूप चल नहीं सकता. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के अंदर कैश ब्लॉक में गया, वहां से उसने ये मैसेज प्रिंट किया, कैश ब्लॉक से बाहर निकला, कैश ब्लॉक के बाद का जो कोड है, रेस्ट ऑफ द कोड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं दिखा, स्टैक ट्रेस नहीं दिखा, स्टैक ट्रेस नहीं दिखा. ठीक है, स्टैक ट्रेस अगर मैं प्रिंट करूंगा तब क्या होगा? मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करने के बाद, इस मैसेज को प्रिंट करने के बाद मैं ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस अगर प्रिंट कर देता हूं एंड लेट मी रन द कोड, व्हाट विल हैपन? वी विल गेट एन extra information in the form of stack trace, but the stack trace will show you the actual reason, array index out of bound exception. ठीक है, people online, it's clear? Yes sir. देखो लोग यहाँ वेट कर रहे थे. I cannot see the screen because once I am teaching I won't be able to see the BT screen, and if people are waiting I am just helpless in that case. ठीक है, okay. Now there's going to be something interesting. We're going to see something very interesting. Let's undo the code. Let's have both the exception types, string index out of bound exception as well as array index out of bound exception. Okay. Okay. I've undone the code, and we have got both the exception types now. Yes, sir. ठीक है, चलिए. जी ठीक है, चलिए. ये कोड तो क्लियर है ना? So for two different problems, we have got two different cache blocks as earlier. I've undone whatever changes I've made. ठीक है? So if you want to, show in your lab file that those situations where you are having different try blocks, or whether you are having index out of bound exception as just one exception, you will have to go through the video and then create the programs. And I'm assuming that you are doing it at your home, क्योंकि मैंने आपको ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया हुआ है. अगर आप फिर भी नहीं कर रहे, then it's nothing. There's nothing I can do actually. ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता फिर. ठीक है, ये वही बात है कि डॉक्टर आपको बुला रहा है कि भाई दवा लो, और आप कह रहे हो कि भाई मैं नहीं लूंगा तो क्या करूंगा फिर? डॉक्टर क्या करेगा फिर? ठीक है. Now let's say I am just adding a cache block at the last, and that says index out of bound exception ex. Okay, this is the parent class. String index out of bound exception and array index out of bound exception were the child classes of index out of bound exception. So I'm saying that either if I just remove any of these cache blocks, then say for example, if I remove this cache block, I'm not removing, just assume I've removed this cache block, array index out of bound exception. And if array index out of bound exception comes, it will not be caught by the string index out of bound exception cache block, but rather it will come to the cache block of index out of bound exception, parent class. Okay? But if both are there, then they will be caught by either one of the two. And this code will not reach.
will not reach. ठीक है, because you have its child class exception before class exception handler before index out of bound exception. But what if जल्दी ना ले मानवी सुधर जाओ, माइक बंद करो। मानवी माइक म्यूट करो। हेलो ऐसे क्यों उससे लगा फेस वाली जाती है कोई बात नहीं वैक्सीन हो जाएगा हैं निकल जाएगा इससे तो बारी हो जाएगी। यहाँ से दिखता है उसको। चलो कर दिया उसने, देर से सुना, कम से कम सुना सही। Please guys keep your mic mute, otherwise you will know everything about your home, what's going on there. ठीक है, अगर आपकी मम्मी आपको डांट भी रही होंगी तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब कैच ब्लॉक को एक उठाते हैं यहाँ से और इसको ले करके आते हैं इस जगह पर सबसे पहले। ठीक है, we have brought the cache block from the last position to the first position, which has got index out of bound exception. This particular cache block doesn't matter what if we have written anything inside the cache block or not. ठीक है, as of now, because this is just for the demonstration purpose. In real world, you will when your code will be reviewed, when you do something in the company and you have written a cache block, and when your code will be reviewed, then if you have left a cache block empty, you will be immediately scolded by your manager. ठीक है, this is as saying that you have eaten or digested the exception which has occurred. अगर कैश ब्लॉक खाली हो तो कहते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म में कि एक्सेप्शन हुआ और तुम उसको खा गए, यानी तुमने उसको रिपोर्ट भी नहीं करा, कम से कम लॉग फाइल में भेज देते, कुछ नहीं कर सकते थे तो ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटर देख लेता, उसको कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता, वरना कोई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते उसका। वरना कैश ब्लॉक लगाने का पर्पज ही क्या हुआ? अगर वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो छोड़ ही देते, फिर उसको हैंडल ही नहीं करते, है ना। लेकिन अगर हैंडल करा है, कैश ब्लॉक लगाया है, तो उस कंडीशन में अगर आपने कैश ब्लॉक को खाली छोड़ रखा है, इसका मतलब आप उस एक्सेप्शन को खा जा रहे हैं। ठीक है, यू आर जस्ट ईटिंग अवे द एक्सेप्शन इफ यू पुट द कैश ब्लॉक एम्प्टी। So you should never do this. This is just for the demonstration purpose. So I want to demonstrate something else. So I have just put over here as the first cache block, which is about index out of bound exception. ठीक है, as soon as I have removed it from the last position to the first position, we are getting a compilation error. Unreachable cache block. Unreachable cache block. String index out of bound exception. It is already handled by the cache block for index out of bound exception. ठीक है, it is already handled by the cache block here. Here also you will say the same exception. Unreachable cache block for array index out of bound exception. It is already handled by the cache block for index out of bound exception. So this is for sure that if this cache block with index out of bound exception is before the child class cache blocks, then the parent class, because they will be checked sequentially, right? The first cache block will be checked and the control will come into here because it's the parent type. So चाहे string index out of bound exception हो, चाहे array index out of bound exception हो, जब पहला कैश ब्लॉक पहले चेक होगा तो उसमें ही ये पकड़ में आ जाएगा, तो ये कैश ब्लॉक में पहुंचेगा ही नहीं। जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो कंपाइलर इसको फाइंड आउट कर ले रहा है और ये कह रहा है कि आप पेरेंट क्लास का कैश ब्लॉक चाइल्ड क्लास से पहले नहीं लगा सकते क्योंकि पेरेंट क्लास ही उसको पकड़ लेगा। क्लियर हो रही है? तो आपको कंपाइलेशन एरर यहीं पे मिल जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोड इफ यू सी दिस काइंड ऑफ कोड इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है, इन एनी ऑफ द जावा एग्जाम्स, नॉट ओनली जस्ट जावा एग्जाम्स, सी शार्प एग्जाम, ठीक है, if you see any of such code, then just know that it's a compilation error. It's not any of the complex outputs that they have given in the solutions, one of the solutions, but it's a compilation problem. ठीक है, okay.
Then again, there was a question for the genius. When we have done this, catch block for index out of bound exception is at the last. Then also we know that the exception, whether it's a string index out of bound exception or array index out of bound exception, they will be caught here, either here or here. So that means this block is also not reachable, but the compiler is not complaining. But कहाँ छूटेगा? इसके बाद कहाँ है? इसके बाद कोई और कोड तो नहीं है ना? अगर मैंने इसके बाद कोई और कोड लिखा होता फिर ट्राई कैच लगाया होता तो समझ में आती बात। ये तो कैच ब्लॉक इसी कोड के लिए है ना, इसी पार्ट ऑफ द कोड के लिए है ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है। किसी और का भी पेरेंट हो सकता है। ओके, द केस इज there is a possibility that index out of bound exception may be the parent of any other exception. Yes, that is possibly true. Okay, but as of now we can see that in the type hierarchy, we can figure it out in the type hierarchy in fact, right? देखिए index out of bound exception क्या है, इसके child class क्या है, array index out of bound exception, string index out of bound exception, and there is a class too large exception, again an exception, right? And method too large exception. So in these cases also this exception might be caught by the index out of bound exception catch block. So that is the reason it is allowed here. And even if these two exceptions that are extra that I've just shown, if they were not available, then also it will not show a compilation error, because the next day you can write an exception class ABC extend index out of bound exception. फ्यूचर में भी तो आप लिख सकते हो ये एक्सेप्शन जो इसका चाइल्ड हो, उसको कभी प्रोहिबिट नहीं कर सकते. बट इफ दिस एक्सेप्शन इज कैच ब्लॉक इज मूव टू द फ्रंट टू द टॉप मोस्ट पोजीशन, then it is for sure that whatever the child it may have at the current time or it may have in the future, they all will be caught by the parent class type. ठीक है, तो वहां पे वो कंपाइलेशन एरर देगा. See how genius they are, the developers of the language, how genius they are. ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, एक आप एक डिब्बे बराबर चीज सीख रहे हो तो उस डिब्बे के अंदर की हर चीज को और बाहर की हर चीज को सीखो. ठीक है, फिर अगर उससे रिलेटेड कोई चीज आपको कहीं भी दुनिया में मिलेगी तो आप उसको बड़े आसानी से समझ सकोगे. क्लियर है? People online, is it okay? Yes, sir. बहुत धीमी सी आवाज आई है, नहीं समझ में आया है. चलो वीडियो देख के एक बार फिर से समझ में ना आए तो पूछना, ठीक है? Okay, अच्छा, sir. टेल मी वन थिंग, आपका सेशनल अगर मैं थर्सडे से पोस्टपोन करके मंडे कर दूं तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा? मतलब कुछ बेहतर कर पाओगे या बस इस तरह से कर रहे हो? सर कर लेंगे. अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं मंडे को कर रहा हूँ. ठीक है, सो टुडे इज गोइंग टू बी अ क्लास, टुमारो इज गोइंग टू बी अ क्लास, देन on Thursday I won't take the class because Siddharth will be taking the class for the two batches. हाँ चलो तुम बता भी देना तक, ठीक है, देख लेंगे उसको जैसा करना है. Friday I will take a short class, a very short class for not for teaching purpose but for other things, discussing other things. ठीक है, जैसे कि कुछ कंटेंट जो है जो अनटच रह गया है उनके लिए मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, तो वो सब चीजें हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे. तो फ्राइडे का छोटा सा क्लास होगा लेकिन उसको अटेंड जरूर करिएगा, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चीजें रह गई हैं. ठीक है, so Friday we will have a small class. I will give the notification on the WhatsApp group, not for the technical discussions but for other considerations. ठीक है, regarding the exams and देख लेंगे किसी भी टाइप का फ्री होगा, चाहे फर्स्ट हाफ में फ्री हो, किसी आप कभी फ्री कर दिए तो कर सकते हैं हम. ठीक है, हाँ सारे ही बैचेस से मैं डिस्कस कर लूंगा और ऐसे टाइम में लगा लूंगा. ठीक है, ओके. सो with this concept at place that we have just discussed right now, that if I put a catch block of a parent class
before a catch block of a child class, we will get a compilation error because the child class's catch block will not be reached. Okay, that's a certain thing. In other cases, it's an uncertain thing. This is the uncertain thing कि हम नीचे डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर डालेंगे तो it will be a certain thing. ठीक है. Now similarly, if I remove all these, catch blocks, and I say catch runtime exception EX. What will this mean? सिर्फ दोनों आएगा. Runtime exception is the class which is extended by a unchecked exception, right? Correct? Type hierarchy में आप देखिए. So object class का child क्या है? The child of object class is throwable. The child of throwable is exception, which is a checked exception. But if there is a runtime exception, which is the child of exception, and it's coming in any of the class hierarchies, then all these classes, all these exception classes, they are runtime exceptions because runtime exception is coming in the class hierarchy somewhere in between. So that means all these class hierarchies, whether it's a abort exception, adapt failure exception, address exception, annotation type mismatch exception, or XYZ, there will be hundreds of exceptions. The whole long list is there. ठीक है, including string index out of bound exception, index out of bound exception, array index out of bound exception, and so on. ठीक है, there is a whole lot list. So that means all the unchecked exception will be cached by this cache block. All the unchecked exception. अगर इसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड में से किसी भी तरह का रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है, किसी भी तरह का जो डिफाइंड है, ठीक है, चाहे जावा वर्ल्ड में डिफाइंड हो, चाहे आपके इस एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक में डिफाइंड हो. जैसे मैंने जो डिफाइन किया था, चेक एक्सेप्शन डिफाइन किया था, है ना, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, दैट वाज अ चेक एक्सेप्शन. अगर वो अनचेक्ड होता तो वो भी कैच होता है यहाँ पर. क्लियर है? अच्छा, व्हाट इफ I do this? Exception class is, by the way, the parent class of even the runtime exception and the parent class of all checked exceptions. Okay? So in this case, what will happen? Every exception will be called. So it's like catching a universal, providing a universal catch block for all kinds of exceptions, which is extremely a bad thing to do, because then you will not be able to handle them separately as per the nature of the problem. You have the multiple catch blocks because you want to handle them separately as per the nature of the problem. अगर string index out of bound exception आ रहा है तो उसके catch block में जाए और हम string की वैल्यू को चेंज करेंगे, कैरेक्टर एड पे क्या हमें फेच करना है. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो हम अरे में जो जितने टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू को लिमिट करेंगे, कम करेंगे. ठीक है, so we want to handle them separately, right? We want to handle them separately, so we had got a number of catch blocks. But putting this catch block or even putting a runtime exception catch block is going to merge a lot of exception into one catch block, and that's a bad thing because we won't be able to handle them separately. ठीक है, हर एक का कॉज अलग है ना, हर एक का नेचर अलग है, हर एक का हैंडलिंग अलग होगी. ठीक है, बट स्टिल दिस इज अ प्रोविजन. रन करें. एक्सेप्शन कौन सा आएगा? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा. इसके अंदर कुछ प्रिंट कर दें, प्रिंट करते तो पता चलेगा ना. इन catch block with catch all, that is exception. ठीक है, ठीक है, करेक्ट. ओके, तो एक बार क्लास हायरार्की मैं यहाँ बना देता हूँ. व्हाइट बोर्ड.
So you know that there is the object class which is the parent class of all the classes. कभी-कभी ये class hierarchy पूछते हैं exam में. Sometimes people ask this class hierarchy. So we have the object class. Then there is a child class which is throwable. Throwable. हाँ ठीक है. Then the child class of throwable. There are two child classes of throwable. One is exception. Exception class. One is, we have not discussed error class as of yet. Okay. Then the child of exception class is a runtime exception. Exception. So all the runtime exception like index out of bound exception are the child of runtime exception. Okay. Whereas there is a direct classes of the type exception like IO exception, the child of IO exception is file not found exception. Okay. Other so many classes. Here also other so many classes. Okay. Clear? Now, everything which is throwable could be caught. Everything which is throwable could be caught. That means exception could be caught as well as error could be caught. Okay? Error is something different. Error is something different. Okay? So just like in the cache block we have put the exception, we could also put error. And we could also put throwable. We could also put throwable. Now let's talk about the error first. What is error? So to explain it, let me show you one of the examples. I have already got it with me. Error. Yeah, this one. Just look at it. Exception example 5. We have got the main method. We have created a list, object list. Of course, we will prefer to use the parent type list interface as a type declaration. This is of the type string only. That means list is going to contain only the string objects. We have used generic to restrict it. Generic is very much similar to the template in C++. Okay? And the real object is of array list. It could be also a linked list, but the real object is, the real list is going to be the array list. Again of string objects. Okay? Clear here, sir? Then try. We are trying from this position to this position till the cache block. Okay? We are iterating into a loop for a long value, a very, very long value. I is equal to 0 to I something very long value. Okay, I can increase this value. I plus plus. String str is equal to new string object plus I. Now, there is a thing that I need to tell you before I move further. There are two ways which can be used to create a string object. You can also say string str1 is equal to under double quote, say some value. You can say this also. Okay? Or you can use the new also, new keyword also. Okay? Both will create the objects and will assign the object to str1 and str. Something semantically same from the perception of the developer. ठीक है, दोनों का मतलब सेम हो रहा है. ये एक तरह से शॉर्ट हैंड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? करेक्ट. और ये सेम आपको बताया था कि these are available for the wrapper classes also. Equal to असाइन कर सकते हैं आप डायरेक्टली. इंटीजर integer क्लास इंटीजर I is equal to 5 और integer I is equal to new integer under bracket you can write 5.
ठीक है, so you can do both the things in the wrapper classes also. We have discussed in the past classes, so you will get inside the lecture. Don't worry. ठीक है. So both the things are same from the perception of the developer, but from not from the context or from the way the compiler sees this. The JVM sees this, not compiler. The JVM sees this. Now there is a difference between this kind of object creation and this kind of object creation for the string class. ठीक है, डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको क्या है. See what happens in the heap. This heap contains all the objects. Heap contains all the objects. You know that stack contains the local method, local variables, right? In the instruction sets, but the heap contains all the object. A string class is a class, so every string which is being created is an object. ठीक है, चाहे वो equal to करके हम डबल कोट में उसके वैल्यू असाइन करें, चाहे न्यू यूज करके हम असाइन करें, इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? So there is something called as separate area in the heap, and this separate area is called as, this question is many times asked in the interviews for Java developers. ठीक है, this is asked that this particular area of the heap is called as string pool. String pool. ठीक है, ठीक है, correct. Now what happens when you use this simple equal to, and throughout the execution of the program, if the object of that particular string is already created, one copy of it is also put into the string pool. And when you say str1 is equal to double quotes, say is, let me say str1 is equal to under double quote is, for example. ठीक है, this is a string. ठीक है, so it will be checked if there is an object which contains the value is. So new object will not be created, rather the reference of this object will be assigned to str1, so that we limit the creation of the object. Not so many objects should be created. This will be helpful where you have got a very lengthy file to read. So is, this, am, I, the, such kinds of words are going to be repeated very frequently when the files are read or written. So their objects are already created while the file is being read, and they are still referred by some of the variables. They must be in the string pool before collected by the garbage collector. So why to create a new object and destroy or waste the space of the heap? So that will be just used from the heap itself. ठीक है, correct है? That is the reason why if you say a string str is equal to under double quotes hello, ठीक है, and then you say str dot concatenate. There is a concatenate method to add something to the hello, and then you will add something, say for example world. ठीक है, you will try this code. I'm just writing, I'm not writing the code. This is on you to try this code. ठीक है, then you say system dot out dot println, and you print str. What is the expected output? Hello or hello world? It appears that the output should be hello world, right? It appears that the output should be hello world, but this is wrong. This is wrong because we have concatenated, but we have not reassigned it to str. If we do this, then only we will get the hello world. अगर ये हम कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा, वरना ये wrong होगा. ठीक है, why? Because this string is available in the string pool, must be referred by 100 of reference variables.
If this string is changed using concatenate method, all those reference variable will be changed. So what the Java is expecting you to reassign to the specific reference variable to which you want to concatenate it. This property of any class, specifically we are using the term for the string class, is called as immutability property. Immutable. We called a class immutable when its value cannot be changed unless we reassign a new object. That means this str.concatenate is going to create a new object itself. It's not going to change the initial object, because if the initial object is changed, the 100 reference variable from the string pool will get the new value. So it's not going to change the initial object. It will leave it as it is. A new object will be created. But if a new object is created, its address needs to be assigned to a reference variable, right? So unless you assign the reference variable, you will not get the change value as the output. Okay? So string class is immutable. Now there is a question, just write it down. Very favorite questions of the interviewer. Why string class is immutable? I have given the answer. Because of the string pool. इसको आप गूगल करोगे, आपको दोबारा आंसर मिलेगा, दोबारा पढ़ना. Why string class is immutable? And then the next question is how to make a class immutable. वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, आपको पता है. How to make a class immutable. How to make a class immutable. जैसे इसको immutable string class है ना, how to make a class immutable. I'm not telling you why string class is immutable is the first question. ठीक है? Very basic question. Usually asked from the freshers. But the second question is usually asked after 1 or 2 years of experience. How to make a class immutable? Or if you claim that you are a very good Java expert, even at the fresher level, they will ask the question. ठीक है? तो कुछ certain questions है जो घूम फिर के हर इंटरव्यू पूछता है, अगर लैंग्वेज पे आपका इंटरव्यू हो रहा है तो. ठीक है? Okay guys, so with this concept in mind, let's go back to our code. देखिए, कभी कभी एक छोटी सी चीज बताने के लिए मुझे कहीं आपको दूर ले जाना पड़ता है, और सब कुछ एक सीक्वेंस से नहीं बता सकते. इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए बिना, अगर फर्स्ट दिन जब मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त जब आपको इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट और लेकर के पूल का कंसेप्ट बताना बैठ जाता है, स्ट्रिंग पूल का, कहाँ समझ में आती भाई? ठीक है, आइटरेशन में इसीलिए पढ़ाते हैं. ठीक है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये कर क्या रहे हैं. कभी उसी चीज को दोबारा पढ़ाने लग जाते हैं, फिर उसी चीज को दोबारा पढ़ाते हैं, आधी चीज पढ़ाते हैं, पूरी चीज नहीं बताते हैं. दिस इज द रीजन आई हैव टू चेक दैट व्हाट इज द लेवल और व्हाटएवर आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, नाउ सी हियर आई हैव यूज्ड द न्यू कीवर्ड. ये तो मैंने अभी लिखा था ना, ये लाइन. एक्चुअली इन द रियल कोड व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूज्ड द न्यू कीवर्ड so that in each iterations that will run for a very long value, new objects are deliberately created. I'm wasting the space. I'm deliberately wasting the memory space, because new is a keyword which is forcefully instructing the JVM that no matter what, whether you have already this value in the string pool, I don't care, create a new object. And every object value also will be different. You see, I made sure that every value object will be different. See, object plus I is always changing. So the value of the string will be object 0, object 1, object 2, object 3, and so on. All right. Now this will keep on running, and every object will be keep on adding to the array list of the type string object list. ठीक है, मैं उस पर ऐड भी करता जा रहा हूँ, एक बड़ी सी लिस्ट बनाता जा रहा हूँ जो एक्सपेंड होती जा रही है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होती जाएगी. You know, it's a dynamic array. Array list is a dynamic array. We know it's we don't have to worry about its size, right? It will keep on expanding. It's a part of the collection interfaces, right? We have discussed in the past classes. And then we are printing the value just for the sake of understanding. Then what we have done is we have put a catch block after the try block out of memory error. It's not an exception, it's an error. You see the type hierarchy? You see,
its parent class is virtual machine error. That means it's coming from the Java virtual machine, and its parent class is error. Exception is not anywhere. Exception is the child of throwable. Okay? So it's the child of error. That is, out of memory error is an error. Out of memory error is also throwable. ठीक है, इधर रिलेशनशिप दोनों में बन रही है, ठीक है, बट आउट ऑफ मेमोरी एरर इज नॉट एक्सेप्शन, neither checked nor unchecked. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, तभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये बहुत तेजी से प्रिंट करना शुरू करेगा. ऑब्जेक्ट 0 1 2 3 4 5 प्रिंट करना शुरू करेगा. देखो क्या कर रहा है, करते जा रहा है, प्रिंट कर रहा है और ऐड करते जा रहा है, क्रिएटेड ऐड टू द लिस्ट, क्रिएटेड ऐड टू द लिस्ट, ये होता जा रहा है, बिकॉज माय कॉन्फ़िगरेशन इज लिटिल बेटर. ठीक है, एसएसडी वगैरह सब कुछ पड़ी है, इसमें रैम अच्छी खासी है, 12 GB की रैम है. So probably it will take overnight to throw the error. If you run this program in a computer which is which has got a low configuration, very low configuration, it may throw the error in an hour, for example, but at least hour you will have to wait. ठीक है, तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि आउटपुट हम देख नहीं पाएंगे आज. आउटपुट देखने के लिए आपको 24 घंटा यहीं बैठना पड़ेगा. ठीक है, तो वो हम नहीं देख सकते, तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ. बट सम डे व्हेन द होल ऑफ द हीप विल बी एक्सप्लॉइटेड, होल ऑफ द हीप इज यूज्ड, then you will read to the cache block, and then you can print a message to basically see if you want to check in your system out of error exception. ये प्रिंट हो जाएगा अगर आप ऐसे लिख दे तो. ठीक है, जब भी एरर आएगी, जब भी आएगी, आप किसी लो सिस्टम में चला के देख लेना, कभी ना कभी एरर आ जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे बाद चला के भूल जाना, आके बाद में चेक करना, ये मैसेज आपको दिखेगा. क्या ये बहुत टाइम लेगा, ये बहुत टाइम लेगा. हो सकता है मेरे सिस्टम में एग्जॉस्ट ही ना हो, ये भी हो सकता है, वैल्यू हो सकता है आपको बढ़ानी पड़ जाए. कब करोगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, ये एरर नहीं आएगी ना भाई. हीप आपका खत्म होना चाहिए ना. 12 GB की मेमोरी है, अब कितना JVM के लिए उसने रॉकेट कर रखा होगा, जाहिर सी बात है नॉर्मल से ज्यादा कर रखा होगा, नॉर्मल मशीन ज्यादा कर रखा होगा, तो नॉर्मल कर रखा होगा तो खत्म होनी चाहिए. आई एम नॉट श्योर, उस पार्टिकुलर मेमोरी का साइज खत्म हो जाएगा जितना आपके इस प्रोग्राम के लिए JVM को अलोकेटेड है. और वो अलोकेट कौन कर रहा है? पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम JVM को अलोकेट कर रहा है, फिर JVM में अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन चल रहा है तो JVM के लिए अलग अलग, JVM के लिए अलग अलग, प्रोग्राम के लिए अलग अलग. ठीक है, तो वो जो इस प्रोग्राम के लिए जो आपका हीप अलोकेटेड है वो एग्जॉस्ट होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी लेस देन द एक्चुअल हीप साइज. ठीक है, बट सम डे इट विल, सम टाइम आफ्टर फ्यू आवर्स इट मे एग्जॉस्ट. ठीक है, इट मे बी गॉन, देन यू विल सी दिस error being printed. But we are able to catch this error because this is the child of throwable, and we can catch everything which is throwable. So we can write out of memory error, or we can write throwable also. So everything which is throwable, whether it's an error or it's an exception, that will be caught if we write this thing. Spelling mistake है, THROW. ठीक है. Now in this case, error and exception, everything will be caught, because exception is also child of the throwable class, error is also child of the throwable class. ठीक है. Now again one important interview question. अभी वो कहेंगे बॉर्डर भी तो होता है. One important interview question, you will see that shall we catch an error like this out of memory error? First the question that the interview may ask, can we catch throwable class? So you will say yes sir, everything which is throwable could be caught. Then he may ask, can we catch the error class? Error, so you can say yes sir, anything which is a child of the throwable class, that could be caught, and error is the child of the throwable class, so that could also be caught. Then the interviewer may ask, shall we try to catch the error? So the answer is, the truth is,
we should never attempt to try to catch an error except for the logging purpose. क्या फाइल में लॉग करना चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है. You should not try to catch the error because there is nothing you can do about it. Because catching means you will provide an alternative, some kind of code which will handle the situation, but this error will happen because of the exhaustion of the memory. अब उसमें आप क्या करोगे, आप फिजिकल सिस्टम खोलोगे, मेमोरी तो बढ़ाओगे उसमें, आपके कोड रन टाइम में क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है ना. या मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन use some utilities. There are possible utilities where you can assign more memory to the particular JVM. That you can do, but then also you have to terminate your program, go back to the utility, do the things, then rerun your program. So while running the application you can do nothing about it. ठीक. So you should not attempt to catch an error because that will serve you no purpose. The solution is not within the program code. The solution you will get from outside the application, right? Maybe sometimes physical problem, physical hardware problem, maybe sometimes some configuration requirements are there. So for those purposes you should not try to catch the error except for, this is a very very genuine answer. यहीं पे खत्म मत कर दीजिएगा, बोलिएगा except for the purpose that we want to log a kind of such situations to report to the admin so that we need to upgrade maybe my hardware. ठीक है, हमें रैम बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, उस कंडीशन के लिए हम कर सकते हैं except for that purpose we cannot do anything in the catch block for error. Correct है guys? Online, is it understood? Nadia is trying to join now. I don't know what she will do after joining because of her. Probably we are speaking English and anyways. भाई ऑनलाइन लोगों से कुछ आवाज नहीं आई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, सो एक लास्ट चीज जल्दी से बता देंगे, आज का क्लास खत्म करते हैं, एक दूसरे प्रोग्राम पे चल रहे हैं हम. ठीक, ये प्रोग्राम याद है? एग्जांपल 4, एक्सेप्शन एग्जांपल 4. We have got a scanner object, we have got a file reader. If file is missing, we will get file not found exception, right? Correct. We have got a buffer reader. If we are not able to create the buffer object or read the line, maybe at that time the file is available, but while reading the line the connection get loose, ठीक है, so the line could not be read, so buffer error may occur, right? Then IO exception, input output exception, right? This we have seen, right? So these are the this is the class that we have already seen. So in this case there was one thing that we have not done in this code, and that's a very bad practice, and that is we have not closed the scan object, we have not closed the file reader or maybe the buffer reader. Okay, so we can do this here, like scan dot close all the resources. Okay, otherwise they will be kind of a dangling pointers. C++ का term use कर रहा हूँ मैं, या C का term use कर रहा हूँ, dangling pointers, right? That is pointing to some object which is no more used, and that's wasting your space, right? That resource is still, it will show as it is being used, but you cannot use it, right? Then file reader, let's see if we have got close method for it also. Okay, yes. Then फाइल रीडर यहाँ पे क्लोज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फाइल रीडर कोई ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो इसके स्कोप से छोड़ना, क्या एक्सेप्शन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम? अच्छा, again while trying to close the file reader we need to catch the exception, because closing a file reader may also throw exception. See, IO exception. Okay, so we are trying to close it,
and then we have got, okay, buffer reader. First we must close buffer reader and then file reader, because in the same sequence as it is created, dot close. This will also give me a compilation error, surround with try catch. ठीक है? तो the order matters. आप समझने की कोशिश करोगे, ना समझ में आया तो मुझे पूछ लेना क्यों मैंने इस ऑर्डर में किया है क्लोज. But now tell me the situation. If an exception occurs either in line number 47 or in line number 48 or in any of the line numbers of this cache block, ठीक है, or in line number 26, and that exception is maybe a runtime exception, unchecked exception, and that is not handled. That is not handled. No other type of exceptions are handled. ठीक है? So what will happen? The program will terminate abruptly, and then these lines of code, the resource in which I am trying to close the resource, this will never execute because the code will come out of the program. Exception handle ही नहीं किया, हमने handle कर लिया तो ठीक था, handle नहीं किया. So this is guaranteed that this may not run in such situations. ठीक है? So we have got a finally block, just like cache block. We have got a finally block, and this finally block is meant for the purpose to basically put all the resources which needs a closure. And why here? Because it is guaranteed that no matter what, finally block is ultimately going to run before the program stops its execution. Let me repeat. No matter what, कुछ भी हो जाए, finally block is going to run. Finally block run करेगा before the program execution is stopped. जब तक प्रोग्राम का execution stop हो उससे पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, finally block आपका रन करेगा ही करेगा. कहीं भी exception आता है, वो exception handle नहीं होता है, कुछ भी होता है, प्रोग्राम abruptly terminate करने से पहले वो चेक करेगा क्या finally block प्रोवाइड किया गया है. Finally block प्रोवाइड किया गया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो रिसोर्स क्लोज कर रहा है, इस ब्लॉक को वो जरूर रन करेगा. आपका JVM फाइनली ब्लॉक आपका 100% रन होगा. ठीक है, समझ में आ गई बात? Other thing to note is that just as a part of the rule, you cannot have a try block in isolation. You cannot have a try block in isolation. See, you will get control Z. मैंने एक एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से ये डिलीट कर दिया है. फाइनली कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है. क्या बात है? क्या हो रहा है? ये एक एक्स्ट्रा कुछ है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना, मिन का है, और क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है. हाँ, this is what I want to show you. Insert finally to complete. You can have a try block with at least one cache block. हमने देखा ये situation. We have seen this. You can have a try block with at least one cache block. You can have a try block with just a finally block, even without a cache block. चेंज कर दिया क्या प्रिंट लोगों ने? करते रहते हैं. कैच ब्लॉक में हटाता हूँ, रुको, फाइनली रन देता हूँ, कैच कर देता हूँ. कुछ मैंने मिस्टेक किया था. ये कैच ब्लॉक के लिए कह रहा है, चूंकि ये आपका एक्सेप्शन बेसिकली वो है ना, अनचेक्ड है, तो यहाँ पे आपका कैच ब्लॉक आपके लिए होना जरूरी है. ठीक है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ जहाँ पे नल पॉइंटर टाइप का एक्सेप्शन है. ठीक है, यहाँ पे ट्राई है, कैश में हटा देता हूँ फाइनली. ओके, आई हैव गॉट अ ट्राई ब्लॉक एंड अ फाइनली ब्लॉक एंड नो कैश ब्लॉक, ओनली फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन, नॉट फॉर द चेक्ड एक्सेप्शन. बिकॉज़ चेक के लिए तो कैश आपको लगाना ही पड़ेगा ना, ट्राई लगाएंगे तो कैश भी लगाना पड़ेगा. वो चेक्ड एक्सेप्शन बनाई इसलिए क्या वो तो कैश करे, राइट? So we can have only we can have a try block with a finally block, or we can have a try block with a catch block, but we cannot have a try block without a catch or a finally block. If you see such code, know that it's a compilation error. But don't worry about this code, because this code will compile. I have tried. Let the catch.
exception occur, let the JVM print the stack trace, but finally must do something which I want to do before the program gets terminated. ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन में फिर भी छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए फाइनली ब्लॉक अलाउड है. ठीक है guys, so that is all about exception that I could discuss. There's too much yet to be discussed, but yet it's a decent level. ठीक है. फाइनली मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, प्रिंट कर देता हूँ, कुछ देख लो. हाँ ठीक है, देख लो, ये सही बात है. In finally block. Now I will get the exception, a null pointer exception. There is no cache block, so the JVM is going to print the stack trace, and then I am expecting that this finally block runs and this message is printed. ठीक है. See, in finally block में काम किया उसने, उसके बाद terminate किया, right? The finally block is executed first, and then the program terminates, control goes to the JVM printed this stack trace. This is done by the JVM, right? Correct? ठीक है. Okay, I'm dropping the call, guys. You must be having the next class at 3. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome.